Hi guys, welcome back to my channel. So in today's video I'm gonna share this gorgeous and beautiful makeup look which you can create for your new like Saraswati puja makeup, and it's really nice and really quick and really simple. You just need like 3 products and that's it. So in this video I'm gonna share like really good quality drugstore makeup so you can create like this look or any other look. And ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स क्या होता है ना, कभी कभी नॉन पिगमेंटेड होता है, कभी कभी अच्छा नहीं निकलता है. बट आज का वीडियो में मैं ऐसा सारा प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा भी है. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो. सो वेरी फर्स्ट आई एम जस्ट यूजिंग सम सनस्क्रीन बिकॉज पूजा में क्या होता है, हम सब लोग बाहर इतना ज़्यादा घूमते हैं एंड हम लोग अपना स्किन के बारे में भूल ही जाते हैं कि लाइक वी हैव टू पुट सनस्क्रीन और यू नो समथिंग टू लेयर ऑन, लाइक बिकॉज अदरवाइज़ क्या होगा ना, स्किन जल के एकदम बेकार हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा. So that's why I'm using this sunscreen, and this is my absolute favorite drugstore sunscreen, guys. If you have like 200 or 250 ka budget, just get this because it's so affordable and super good. I literally use this every single day, and I use this on models or all sort of makeup ke underneath. I use this products all sort of मेकअप के अंदर में. लाइक आई यूज़ दिस एज अ प्राइमर एंड आई यूज़ दिस एज अ मॉइस्चराइजर एज वेल. इट्स really nice. And today also I will teach you like how you can do flawless and nice base for your acne prone skin. as we all know, like जब भी हम लोग कॉलेज जाते हैं या फिर लाइक फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम हम लोग के फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल आता है जस्ट फॉर हार्मोनल चेंजेस एंड हार्मोनल थिंग्स. इट्स really कॉमन एंड ये चला भी जाता है बाय द टाइम गोज़. एंड हम लोग जब एडल्ट हो जाते हैं ये चला जाता है. बट this time it's really tough for me because my face is like, oh my god, it's doing horrible right now. And next I'm using this pore minimizing primer from Swiss Beauty. It's a really nice primer, guys, and it's really good for your acne prone skin because if you have acne ना क्या होता है, एक्ने के ऊपर वाला पोर्शन होता है बहुत ही ज़्यादा ड्राई एंड इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू पुट सम बेस एंड उसको अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो यू कैन चेक दिस आउट बिकॉज इट्स रियली गुड प्रोडक्ट्स एंड ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है. सो मेरा फेस जो है वो प्रेप एंड प्राइम हो चुका है. सो आई मूव ऑन टू द फाउंडेशन. सो फॉर द फाउंडेशन आई एम यूजिंग इलेगर्ड प्रो कंसीलर. इट्स अ रियली नाइस कंसीलर. सॉरी, नॉट कंसीलर, इट्स अ फाउंडेशन. फिर मैं एक डैम स्पंज ले लूँगी एंड इसकी मदद से मैं अपना फाउंडेशन ब्लेंड करूँगी. As you can see, it's a really nice medium to high coverage foundation. जिन लोग का फेस में भी एक्ने है, they can try this out because it's so nice and super duper affordable and blendable also. Not super duper affordable but at least it's affordable and it's last you forever. At least ये तो मेरा ख़रीदा हुआ ये 2 साल हो गया and it's still like बहुत सारा है that मैं इसको और भी 1 साल चला सकती हूँ, इतना ज़्यादा है. लाइक लिटिल गोज़ लॉन्ग वे. अगर आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है देन यू डोंट नीड टू मच ऑफ फाउंडेशन और कंसीलर. बट मेरा जैसा बेकार एंड भद्दा स्किन है देन यू नीड टू मच ऑफ कंसीलर एंड फाउंडेशन. ये सब पोर्शन में आई एम गोना अप्लाई सेकेंड लेयर से बिकॉज आई फील लाइक दे नीड मोर कवरेज. And now for the concealer I am using Elegant Pro concealer. This is in the shade Cool Tan. ये मेरा टोन का कंसीलर है. मैं सबसे पहले अपना टोन का कंसीलर अप्लाई कर लूँगी जहाँ भी मुझे नीड है, लाइक अराउंड माई आई एरिया एंड अराउंड माई माउथ एंड जहाँ भी पिंपल का स्पॉट है मैं वो सब जगह अप्लाई कर लूँगी. एंड गाइज डोंट वरी गाइज, पिंपल का स्पॉट ढकना इम्पॉर्टेंट है, ना कि पिंपल का बाउंसीनेस. मेकअप से कभी भी पिंपल का बाउंसीनेस नहीं जाने वाला है. मेक श्योर
बट जो डार्क स्पॉट है ना वो चला जा सकता है. सो ऑलवेज दिमाग में ये रखना है कि लाइक जो बाउंसीनेस है वो मेकअप से कैसे जाएगा, राइट? वो तो रहेगा ही, बट जो डार्क स्पॉट है वो हट सकता है. And for blending I'm using here Pack 272 brush. And for lightening concealer, here I'm using Elegant Pro concealer. This is in the shade medium beige. And for setting my face, here I'm using this K Beauty loose powder HD set. As you can see, can you see the patch right here? Super dark. The powder is really nice. As I can see, it has some little bit of coverage, which is really nice, and other than that it's really nice. So let's apply on our under eyes, so to see like how it's perform on our under eyes. And for contour I'm using this Color Bar contour palette. It's really pigmented, guys. It's really pigmented. Like, I love Color Bar products in general. Contouring my nose, so I'm kind of pinching my brush like this, and for blush on I'm using this K Beauty blush on. This is in the shade Sweet Salmon. So let's quickly change into my sari for my Saraswati puja look. So let's move on to the eyes. So for my base I'm using here K Beauty blush on. इसी को मैं एज अ ट्रांजिशन शेड यूज़ करने वाली हूँ. सो आई एम यूजिंग Allure 227 flat blending brush. I'm using into my crease. You just have to do circular motion to blend this out. And next I'm using this NY Bay blue kajal. This is a very nice deep blue kajal. I'm just mostly concentrating on my outer corner, like outer portion of eyes. And मैं ये same kajal अपना waterline में apply करूँगी. And I'm smudging this kajal with the same brush. So I'm almost done with my eyes. So now I'm gonna use some glitter on my eyes. So this is by the brand Swiss Beauty. थोड़ा सा ले लूँगी अपना हाथ में, like so. Wow, it's looking absolutely gorgeous. एंड मैं एक स्पूली की मदद से अपना आईब्राउ ब्रश कर लूँगी. मैं आईब्राउज में कुछ भी नहीं करने वाली हूँ गाइज, बिकॉज इट्स ऑलरेडी really thick and nice. And for highlighter, here I'm using the half and half baked glow highlighter. It's a really nice drugstore highlighter, guys. ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है. So मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगी रोज़ गोल्ड कलर एंड दिस गोल्ड कलर. आँखों में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है. सो आई डोंट वांट टू रुइन इट एंड आई वांटेड टू मेन फोकस मेरा आईज पे ही होना चाहिए. तो उसके लिए मैं लिप्स को न्यूड रखूँगी. एंड फॉर दैट हियर आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी लिप लाइनर. And for lipstick I am using Maybelline. This is in the shade Soho Nude. I absolutely love this one. And this is the final result, guys. I hope you guys enjoy watching this video, and if you find this video helpful and थोड़ा बहुत भी आपको help किया है, please guys do not forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. It will help me to grow, and of course it will motivate me. Thank you so much for watching, guys. Till then, take care. Bye bye. Love you.